Good morning, student. Now today I am taking a English class for second class. So student, first you take your term books and open the page number 15. Our second chapter, the chapter name is The Clever Farmer. The Clever Farmer. What is the meaning of clever? Clever means be smart, होशियार. फार्मर्स यू नो, जो खेतों में काम करते और अनाज उगाते वो लोगों को क्या बोलते? फार्मर्स. द क्लेवर फार्मर. ओके, शैल वी स्टार्ट अवर चैप्टर. Once there lived an old farmer. He had a big farm. He had a big farm. Farm means bagh. With many coconut trees and mango trees. With coconut trees and mango trees. Two types of trees in this farm. He worked hard and become very rich. The farmer do work hard and become very rich. He had two lazy sons. He has two lazy sons who did not work at all. These two sons did not any work. This made him very unhappy. Who unhappy? Farmer. So student, so my dear children, see, he is our farmer. He is our farmer. Old farmer, he had two lazy sons. How many sons? Two lazy sons. The old farmer had a big farm. उसके पास क्या था? Big farm. Farm बोलते आप लोगों को बोली ना मैं, बाग था उन लोगों के पास. With many coconut trees and mango trees. क्या ट्रीज थे उन लोगों के पास? कोकोनट ट्रीज थे वो फार्म में. और क्या थे? मैंगो ट्रीज. द ओल्ड फार्मर फील वेरी अनहैप्पी. वाई? बिकॉज ऑफ हिज टू लेजी सन्स ही फील्स वेरी अनहैप्पी. वाई? बिकॉज लेजी मीन्स काहेल, उन लोग काम नहीं करते थे, इसलिए उन लोगों के फादर को उन लोगों को देखे तो अनहैप्पी फील होता था. ओके. One day, the farmer thought of teaching his son a lesson. It was December. The farmer took his son to the farm. What happened? The farmer took his both the son to the farmer. फार्मर क्या करा? भाई लोगों को कुछ ना कुछ लोगों को लेसन टीच करना, लोगों को सबक सिखाना, उन कुछ तो कुछ काम करना, बल्कि फार्मर क्या करा? अपने फार्म पे दोनों सन्स को लेके गया. The trees had only a few leaves. The farmer said to his sons, the trees has only few leaves. वो झाड़ों पे क्या थे? बहुत कम पत्ते थे. The ground was hard and dry. What the farmer said to his sons? Now the ground was hard and dry. बहुत ज़मीन सूखी और सख्त है, बल्कि बोल रहा फार्मर अपने सन्स को. My sons, he said, I have hidden a treasure in the farmer. Treasure, you know, treasure means things such as gold, silver and jewelers. ट्रेजर्स मीन्स सोना छुपा हुआ है उसके अंदर. सोना, चांदी, जवाहरात जो रहता है उसको खजाना छुपे हुआ है, बल्कि बोलते ना अपन, वैसा ट्रेजर है उसके अंदर, बल्कि अपने बच्चों को बोल रहा, टू लेजी सन्स को बोल रहा. यस स्टूडेंट्स, टर्न द पेज नंबर 16. If you want to find it, who said this? Farmer said to our sons, you must dig deep. But you must dig deep. तुम्हें अच्छा गहरा खोदना है. You must turn over everything bit of soil. You must be careful not be spoil the roots with hitting. Farmer said to his sons, don't disturb the roots. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर फार्मर? डोंट डू डिस्टर्ब द रूट्स. आप जब डिगिंग करेंगे, जब खोदेंगे, तो आप रूट्स को डिस्टर्ब मत करो.
and you must not dig too far from the trunk. ट्रंक मीन्स जो झाड़ का तना रहता ना, बड़ा तना, झाड़ का जो मेन ट्रंक रहता ना, तना, उससे दूर मत खोदो, उसके नियर बाई खोदो, नियर बाई डिग करो बोल के बोल रहे फार्मर। द ट्रेजर विल बी yours only if you dig properly. The farmer said to his sons, if you dig properly, so the treasure will yours. अगर तुम खोदोगे तो ट्रेजर क्या रहेगा, सोना किस मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा बोल के बोले। ओके स्टूडेंट्स, our class is over, so I give to homework. Yes students, this is your homework, hard words. Write in your class work and homework. First hard word is farmer. F-A-R-M-E-R, farmer. Read also F-A-R-M-E-R, farmer. Read all of you with me. C-O-C-O-N-U-T, coconut. C-O-C-O-N-U-T, coconut. M-A-N-G-O, mango. M-A-N-G-O, mango. T-E-A-C-H-I-N-G, teaching. T-E-A-C-H-I-N-G, teaching. L-E-S-S-O-N, lesson. L-E-S-S-O-N, lesson. G-R-O-U-N-D, ground. G-R-O-U-N-D, ground. L-E-A-V-E-S, leaves. L-E-A-V-E-S, leaves. D-E-C-E-M-B-E-R, December. D-E-C-E-M-B-E-R, December. H-I-D-D-E-N, hidden. H-I-D-D-E-N, hidden. T-R-E-A-S-U-R-E, treasure. T-R-E-A-S-U-R-E, treasure. So you write in classwork 2 times and homework also 2 times. I hope all are understood. Thank you students.